Hey, Evening, ma'am. good evening, good evening. How's everyone? Good, good. That's nice. Fine. Okay, so first of all, I just want to tell you that I have prepared some conversations as Anmol was, looking for some conversations which can tell us the kind of perfect tense and all, especially कहाँ कैसे use होगा. तो उसके लिए I just want to tell you that I'm going to share that conversation today. और फिर हम लोग क्या करेंगे कि कल फिर हम लोग we'll be going to have wonderful work, like हम कल उसका थोड़ा सा conversation वही conversation, like you can just have wonderful partner with you, and according to the conversation you can choose it, you can mix some conversations together. जो last time हमको करना था इस बार I believe that आप लोग अच्छे से कर पाएंगे. I can see 1 2 3 4 5 6. There are 6 students right now in the class. Let's see how many of you turn up. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ग्रुप बना देंगे जो अभी प्रेजेंट है उनके साथ में, और उसके बाद में आप लोग आपस में डिस्कशन जरूर कीजिएगा that we are going to discuss this one or we will be having this conversation. एक दूसरे से बात कर लीजिएगा एक बार. You can have a nice chat on WhatsApp if you like. You can just be in the communication, be in touch of each and everyone. जिनके साथ स्पेशली आप कंफर्टेबल हैं, with them you can be. Okay, and उसके बाद आप लोग conversation तैयार जरूर कीजिएगा. Tomorrow we'll be performing that conversation. Okay, कल हम वो conversation perform करेंगे क्योंकि today I am going to share it and I want you to be completely ready, fully ready, and then you will perform tomorrow along with your partners. So let me just give the partners very quickly. The partners are like that: Sarika and Poonam, Babita and Anmol, Harish and Ranjit. So I'm giving you the same genders so that you should not feel uncomfortable talking to each other, and you can just have a wonderful conversation like that. Is that okay? Is that okay? Will you present today? Tomorrow. Don't forget to choose the type of the conversation which are given, क्योंकि हम ऐसे तो बहुत सारी बातें कर भी लेते हैं, and it is good to communicate like that, but मेरा फिर भी suggestion है कि कुछ नया सीखने के लिए वो जरूर use करें which is actually been targeted for that. ठीक है? अच्छा, आज का जो मेरा topic रहेगा, that again last time we had a discussion. We had a performance actually. That performance was about future plans. What are the future plans, especially the short-term and the long-term planning. Even we discussed about that how to decide the short-term plannings and the long-term plannings, and how to prioritize them, and then of course go for it. So we talked a lot. We even did a lot of counseling also that day. Everybody was involved very much. Today, I just want you to just ask some of the doubts you have related to grammar. अगर आपके दिल में, अगर दिमाग में, दिल में, if there are some doubts, आप अभी पूछ सकते हैं. अच्छा, आज वैसे class would be finishing tomorrow. आज खत्म होना था 31st as I told, but as yesterday I was not able to take the class. So or actually मैं आपको Saturday I forgot to tell you that I was not aware actually date wise that okay Monday would be the Janmashtami. So I could not take the class yesterday, and that class will be taken tomorrow. So I will be starting class tomorrow. And as far as the batches are concerned, the new batches are concerned, I'll put a message to you कि कौन-कौन से intermediate batches हैं, so that you can join from tomorrow. So वो actually उसका time, as I know, the time is about 8 to 9, and let's see, it is starting from tomorrow or day after tomorrow. क्योंकि tomorrow, as we know, yesterday there was a kind of holiday, so we could not take class. We and any of us could not take the class. So today we are compensating, and tomorrow we are continuing. Maybe हो सकता है the new batch will be starting from 2nd, so you can join that. ठीक है? I will be informing you about the batches also. Sorry. And then we'll be moving ahead in the learning process.
So abhi your doubts are welcome, very much welcome. If you want to ask anything, you can ask. हेलो मैम। Yes, Anmol. मैम आप जो वो बोल रहे थे ना 2 एक्स्ट्रा टेंस भी पढ़ाऊंगी, वो कौन से थे? मॉडल्स। रिपीट कीजिए। आप बोल रहे थे ना 2 टेंस एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, जैसे कितने होते हैं? 12 होते हैं, आपने बोला 14 पढ़ाऊंगी। तो हमने पढ़े ना टू बी, वैसे 12 टेंसेस ही होते हैं मैडम, टू बी एंड टू हैव जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ कौन से थे वो 2 वाले थे क्या? टू बी एंड टू हैव जो है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ टेंसेस, क्योंकि टेंसेस तो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होते हैं। Then to be and to have we teach separately, and that's why it becomes 14, है ना, 14 बन जाते ओके हैं, मैम। ऐसा हो जाता है। ओके मैम। Any other question? Okay, I will also share the future tense with you. Future की sheet मैं आपके साथ share करूंगी, क्योंकि मैंने I think present की सारी sheets, past की सारी sheets I have already shared. Now would be sharing the future, so आप उसको read कीजिएगा, just have a glance at it, and then ask me if you have any doubt. कल भी पूछ सकते हैं, परसों भी पूछ सकते हैं, कल of course कल जो class है उसमें पूछ सकते हैं, and you can ask the queries or a doubt if you have in your other classes in the next batch also, that is the intermediate one. You can ask the intermediate also. Excuse me, मैम। हाँ जी। मैम मुझे आपसे कुछ सजेशन लेना था। मैम दिस इज द इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस बुक। इसमें मैम स्ट्रक्चर होते हैं, आई थिंक यू नो। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इस बुक को रीड करने का मस्ट वे क्या है? मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। तो इसमें मैं स्ट्रक्चर को रिकॉल करूं, या फिर जैसे गुड की जगह वो नाइस, डिलाइटफुल, गॉर्जियस, मतलब इस तरह के वर्ड एक चेंज करते हैं, उसके 5 सेंटेंसेस बनाते हैं रिप्लेस करके इस बुक के अंदर। तो इस बुक को मैम स्ट्रक्चर वाइज हम एज ए अंडरस्टैंड करना है, या फिर वर्ड्स वोकैबुलरी तो ऑल्सो इम्प्रूव हो ही रही है, क्या स्ट्रक्चर को भी माइंड में हम अगर लेके चले तो इस बुक का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? Actually now that is called drilling. That is called drilling. जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, so हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर लिया, फिर उससे और भी वर्ब्स यूज करके we make more sentences, है ना? The same way, बस वहीं पर है, उसको बस उठा के कॉन्वर्सेशन में यूज कर दिया है। कॉन्वर्सेशन इन दी सेंस वो ऐसा होता है that suppose you have learned to make sentence, it is nice to meet you, तो आपको शो करेगा it is happy to meet you, it is pleased to meet you, it is glad to meet you, it is joyful to meet you, it is joyous to meet you. ऐसे 10-12 स्ट्रक्चर दे देगा या 5-6 स्ट्रक्चर दे देगा। अब now this is called a sentence, this is called a type of sentence जिसमें आपने बहुत सारी vocabulary use करके you drilled it, है ना, उसको drilling ही कहा जाता है। That is called substitute technique. Substitute technique में सबसे अच्छा काम होता है that what we can say that आप एक ही स्ट्रक्चर के बस वो मेन जो vocabulary है वो चेंज करते जाइए, so you are ultimately drilling the structure and you are substituting the word also. At the place of glad you're using nice, you're using pleased, you're using happy, you're using other words also. So कर सकते हैं, but उसको लर्न करने, उसको यूज करने का तरीका होता है
pick that sentence and use somewhere with the help of its meaning. वो single use करके you can just use it singly. It's like Thank that. you, ma'am. And it is basically called substitute technique, which means one structure but many other vocabs, especially. Like मुझे बोलना है I have taken lunch. तो अपन ने क्या क्या सीखा था? I have had lunch. I have eaten lunch. I have taken lunch. So oh, eaten, taken, had are the synonyms. But structure एक ही है. I have taken, I have, like that. So the same pattern is given in the book. That is called the drilling part. Drill करना किसी भी चीज को बहुत अच्छे से practice करना. Practice means of course that kind of practice. एक ही structure से कई सारे words बनाना. So Thank you, ma'am. pick one sentence, pick one usage. बहुत सारा पढ़ ले. Like if you have read, suppose you have read 5-10 words, pages, 5-10 pages, and you have at least 50 structures with different words. अब 5-10 पढ़ने के बाद knowledge इतना सब भर जाता है, so you can use any time. You are able to use it, right? जैसे ये भी होता है. You are, I am able to. I'm able to cook. I'm able to dance. I'm able to understand things properly. I'm able to speak English. I'm able to reach alright. So pick that I'm able to and stick somewhere. Paste it and use in the sentences. This is that kind of things. बस थोड़ा सा check कीजिएगा. If it is authorized book, उसमें कई books ऐसी भी होती हैं जिसमें बड़ी गलतियां होती हैं. So yeah, we can say. तो उसको एक बार बस check करना. The sentences structure should be right, or you can use it, or else you can use without any issue. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Anyone else? और पूछिए कुछ अच्छे doubts होना, queries होना, doubts होना अच्छी बात है. So that others can also understand. You said that tomorrow is a conversation between मतलब किस बारे में बात करना है मैम? I will send you किस बारे में बात करनी, that I will send you. One more thing मैम, मैंने है ना कल एडमिशन लिया था इंटरमीडिएट में, तो वो लोग ने मतलब वो कोई दूसरे मतलब बैच में मुझको ज्वाइन करता था 6 to 7 में. मैंने मैसेज किया कि मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना है, बीच में नहीं पढ़ना है. मतलब उन्होंने ओके बोला, फिर मुझे रिमूव कर दिया ग्रुप से. तो अभी जब स्टार्ट होगा तब because she will be adding you in the new batch. Okay. I saw your message yesterday. And वो हो गया, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया मैं. हाँ, because वो आपको वाला बैच नहीं चाहिए था ना, so she'll be adding you in the new batch. ऑलरेडी मतलब 1 month होने आया था शायद तक, और बीच में से जाऊंगा तो फिर मेरे को सब ऊपर से ही आएगा. तो मैंने बोला कि मुझे स्टार्टिंग से ही The batch was started, I mean, around 16. So yeah, it's been 15 days. I think we have regular classes now. It's been 15 days now. So हाँ ठीक है ना. So she will be adding you in the new batch also. No problem. She'll be adding you. Ma'am, when will new batch start of intermediate? But intermediate batch will be starting from the next week. Actually, the thing is that still the admissions are going on. So until we have at least 15-20 students in a batch, like in your batch, I think 24 students are there in your batch, you know, in basics. So now what we do, we just rest for some time till 15 students to be in the batch. So that because intermediate requires a lot of discussions, it has more spoken exercises. So we need a group to perform that together. We have less individual performances, but many group discussion kind of performances. Then we have debate, and of course the individual presentation is a part of that. So yeah, at least you have to wait for a week for that. Wait for a week. But if you really want to continue, purchase it so that we'll get the number of students, the final number of students for that. Okay. Okay, any other question?
चले। वो मेरे को इंग्लिश बोलते टाइम है ना कभी कभी भूल जाता हूँ, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन बताओ ना। मैं Don't speak Hindi na, you always speak in Hindi. That is the biggest problem actually. Once I have been to my village, so it's been a long time I hadn't been there. So I stayed there for 15-20 days. It was my bua's marriage, so we stayed there. The matter is about 6-7 years. So my bua got married, and I lived there for 20 days, and I actually started speaking. My Hindi turned into my village language. I would not say completely, but my tone got into that because I've been listening to those kind of people, those same words and all. हम ग्वालियर के हैं, तो हमारे यहाँ में ना वो ऐसा बोलते हैं लाइक किते जा रहे हो, इतने बैठो, और काय खाना खाए ले हो, रोटी खा लो, तो हम लोग बोलते रोटी खा लो, तो बोलते रोटी खाए ले हो, इतने बैठो, और बताओ। लड़की को बोलते हैं मौड़ी, तो मौड़ी कैसी हो, like that, so Brij Bhasha is the basic language of the area. So Mathura, Agra, Mathura, that kind of language we have. So we are very तो हिंदी भी वैसे धीरे धीरे हो जाती है। सो हमारी हिंदी भी ना बड़ी कड़क सी है, क्योंकि ब्रिज भाषा इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट लैंग्वेजेस, बड़ी कड़क सी होती है वो। तो क्या होता है कि वहां पे जब आई वाज देयर, आई स्टेड देयर, सो आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी इन दैट टोन। नहीं हम तो बैठे ही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, लाइक दैट। आई स्टॉप स्पीकिंग द नेचुरल हिंदी, आई टर्न माय हिंदी इनटू ब्रिज। व्हेन आई केम बैक, my Hindi was the same. For one, I took at least 1 week to overcome in the sense I got my accent once again in Hindi also. I would not talk about English because nobody used to speak English there. So yeah, I would not talk about English. But Hindi में भी ये चीज होती है कि जब हम सोचना बंद कर देते हैं, when somebody goes to the people who live in Maharashtra or Gujarat or South India as you are living in, आप लोगों की हिंदी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। Am I correct? खाता है तो खाती है तो खाता है, इधर जाता है तुम इधर बैठो, वो हिंदी भी मिक्स हो जाती है, बड़ी डिफरेंट हिंदी है। You know why? Because regional language is either Marathi or Gujarati or any Telugu, Tamil, Kannada and blah blah blah. Now अब हिंदी भी खराब हो गई, क्यों? क्योंकि हम वहां सुन रहे हैं, उस लैंग्वेज को सुन रहे हैं। So language gets influenced by so many factors. One of the biggest factor is listening and then speaking. So you need to maintain that. You need to maintain that कि मुझे भी English सुनकर बोलना है, but मुझे बोलना भी है। Not only listening, not only that reading, writing will help me a lot. Only speaking will help me. Now, what do? You're preparing for IELTS, but you generally use Hindi when you want to express yourself. So I think you should start, exchange your language. You should start exchanging your language from Hindi to English or your own mother tongue to English. That is very important. In the beginning, you will be very slow speaker. You will take much time to express your message. But that is the first step. Without that first step, you won't be able to reach to the last one. That is a thing. Okay. That you have to do. है ना? मैं हमेशा बोलती हूँ, make your default language English. Customer care, एक English में एक दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। एक उल्टा बोल रही हूँ मैं। I always press 2 for English because I want to talk in English. ठीक है ना, नहीं आएगा तो हिंदी में बात कर लेना, क्या प्रॉब्लम जा रहा है? कौन सा वो बोलेगी नो सर आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बोलेगी ठीक है सर, उसको भी हिंदी आती है, शी कैन आल्सो स्पीक दैट, इट्स ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो डिफॉल्ट लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश, नो हिंदी, नो एनी रीजनल लैंग्वेज. For some days now you should have a breakup with all these languages which are being the hurdle of your English improvement. So I think you should work on your speaking skills more than any other skill now, because now you understand the structures, now you understand the things, now you understand the difference between one or the other.
Now this is the time to give some output. Like input is going on, but output is less. Go for it. What do you think? You are still mute. Unmute yourself. Yeah. मेरा नेट बहुत चिपक रहा है ना, आपका आधा तो मतलब चिपक के है. Sorry, can you repeat aloud? Can you speak aloud? Actually, I have network issue now. हाँ. So Tell me now. I think you should do that, you know. You should do that. okay, ma'am, I will do. I हाँ. will do, ma'am. हाँ. You like as you must be doing a lot of practice for your IELTS also. I think you should Yes, ma'am. you should prioritize your speaking first, है ना? So listening and speaking, LSRW should be followed. There are 4 types now. There are 4 skills to be developed here. So 4 skills are LSRW. S is second one. Listening is first one. W and R are the last ones. So yeah, that should be there. And everybody should do this. This is the common exercise, common practice, common mouth gymnasium, gym of your mouth. This is what important things are. मैम कई बार टेंस का समझ में नहीं आता, इसमें कौन सा टेंस लगेगा. जैसे जो टेंस समझ में नहीं आता है ना, उस टेंस को थोड़ा सा देखो कि वो तो बोलते वक्त समझ में नहीं आता है, देखोगे तो क्लियर हो जाएगा. अच्छा ये वाला टेंस है क्या, है ना? तो वो प्रैक्टिस से आता है, लेकिन जब तक यूज नहीं करते हैं ना, सब हिंदी हिंदी रहता है. यूज करना पता ही नहीं चलता कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगेगा. आपको जैसे टेंस हिंदी की में बोलते प्रैक्टिस हैं करनी तो चाहिए. आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस टेंसेस. प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रक्चर पढ़ लिया, 4 सेंटेंसेस बना लिए. सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है रोज सुबह उठो, कुछ और करने से पहले अपने आप से बोलो, अपने आप से बोलो कि चलो थोड़ा ट्रांसलेशन करते हैं, ओरल ट्रांसलेशन करते हैं. तो हम जो 14 स्ट्रक्चर सीखते हैं ना, वो 14 स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होते हैं. पहला हो जाता है पहला सेंटेंस जैसे हमने बी वर्ब सीखा था, तो उसको ऐसे बनाओ कि मैं एक छात्र हूँ, तो बोलो आई एम अ स्टूडेंट. आप हिंदी में बोल दो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट था, आई वाज अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, आई विल बी अ स्टूडेंट. ओके, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक. या मेरे पास एक बुक है. इंग्लिश हिंदी ले लो. मेरे पास एक बुक है, पता है, आई हैव अ बुक. मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक. मेरे पास एक किताब होगी, आई विल हैव अ बुक. ओके, फिर टेंस पे आ जाओ. प्रेजेंट सिंपल से शुरुआत करो. प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक. मैंने किताब पढ़ी, पास्ट सिंपल, आई रेड अ बुक. मैं किताब पढ़ूंगी, फ्यूचर सिंपल, आई विल रीड अ बुक, है ना? मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ रही थी, आई वाज रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ रही होंगी, आई विल बी रीडिंग अ बुक. पहले कहीं लिख लो, उसके बाद फिर बोलो, क्या प्रॉब्लम है? आपको याद होगा मैंने आपके साथ टेंस की समरी शेयर किया था. टेंस की समरी पहले इसलिए शेयर करती थी कि भाई प्रैक्टिस का अंदाज तो यही होना चाहिए. मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ, आई हैव रेड दिस बुक. मैं ये बुक पढ़ चुकी थी, आई हैड रेड दिस बुक. मैं ये बुक पढ़ चुकी होंगी, आई विल हैव रेड दिस बुक. मैं 1 महीने से ये बुक पढ़ रही हूँ. Perfect continuous. I had been reading this book for 1 month. मैं एक महीने से ये बुक पढ़ रही थी. I had been reading this book. क्या चेंज हुआ? था, थी, है का थी, होगा. वैसे ही हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती जाएगी. तो ये प्रैक्टिस जरूरी है. और पता है, जब 2-3 दिन हो जाए, थोड़ा सा फास्ट मोड पे आओ. बताती हूँ कैसा है वो फास्ट मोड. इतना अच्छा लगता है, एकदम प्रैक्टिस हो जाती है. गम्स, टीथ, एयर ब्लोइंग, गले वले की सबकी प्रैक्टिस हो जाती है. इंग्लिश में अच्छा यहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली दे आर वर्किंग विद. कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा. ही इज अ क्रिकेटर, ही वाज अ क्रिकेटर, ही विल बी अ क्रिकेटर. ही हैज अ बैट, ही हैड अ बैट, ही विल हैव अ बैट. ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट. He is playing cricket, he was playing cricket, he will be playing cricket. He has played cricket, he had played cricket, he will have played cricket. He has been playing cricket since childhood. He had been playing cricket since childhood. He will have been playing cricket since childhood. कितना? ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन लगेंगे ये स्पीड लाने में. आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई टाइम लगने वाला है.
करेक्ट। अब Yes, ma'am. कमांड भाई क्या होता, जब मैं छोटी थी ना, तो when I was in 6th-7th standard, my nanny told me to make chapatis. So she gave me one dough, the ball, and I started making. I was not able to make chapati. So my nanny stayed with us the whole summer. So when my nanny used to, my mother used to roll the chapatis. My nanny used to make the chapatis. So she used to call me, खुशबू आओ दो चपाती बना दो लास्ट वाले। तो शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होता था, but later on after 15-20 days I was able to roll chapati. That was not roll completely circle, but I was able to roll it. And later on after 1 month I was able to bake chapati as my mother used to bake, क्योंकि मैं उनको देखती रहती थी। So practice से मैं सिर्फ देखती और बन जाती तो नहीं होता है, we need practice for certain things. तो रोटी बनाना लोग कहते हैं दुनिया का सबसे आसान काम है, खाना बनाना, रोटी बनाना तो कोई भी कर लेगा, है ना, तुम क्या करते हो, क्या करती हो अलग से, ऐसा बोला जाता होगा। अब नहीं बोलते हैं, लेकिन हो सकता है बोला भी जाता हो, खाए तो बनाते हो, क्या करती हो तुम, हाँ बाकी तो बर्तन धोने भाई आती है सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। रोटी बनाना भी अपने आप में बड़ी प्रैक्टिस है। Am I correct? You tell me. दुनिया का सबसे आसान काम सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छी रोटी बनाना, फूली हुई चपाती बनाना, एंड उस चपाती का आटा गूंदना भी अपने आप में एक आर्ट है। हर व्यक्ति पहली बार में अच्छा आटा गूंद लेता है क्या? फर्स्ट टाइम है वो? टेल मी। आई डोंट थिंक। गीला हो जाता है, पानी ज्यादा कड़क गया हो तो कब जाता है, होगा? कुछ तो भी होता है, लेकिन परफेक्ट आटा, perfect dough, you can't make in that first trial. I'm telling you, everybody must be having that experience. मेरा तो है, I don't know about you, but yeah, I have that. तो जब इतना आसान काम में टाइम लगता है, तो of course these structures should be drilled properly. प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। Like हरीश was asking कि हम कल का टॉपिक क्या है, तो मैं बोल दूं कि I said that okay, I would share with you. अब वो अगर मैं बोल दूं कि उसमें ना परफेक्ट टेंस के कॉन्वर्सेशंस हैं, so you will search perfect tenses, you will search perfect tense कहाँ है, लेकिन वो एक्चुअली उसमें सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही हमेशा बोल सकते हैं क्या? दूसरा कोई टेंस मिक्स नहीं होगा क्या उसके अंदर? ये बताइए मुझे। कैन इट बी गारंटीड कि कुछ दूसरा नहीं यूज होगा? इट विल बी देयर। बातचीत कंप्लीट कैसे होगी? नहीं हो सकती। So if you see that conversation, when you see that conversation, you will get to know कि perfect tense तो है, साथ में और भी तो tenses हैं। तो इसलिए मैंने बबीता को बोला था कि सेंटेंस के मीनिंग को समझ के उसको उठाओ एंड पेस्ट समवेयर। आपको अगर उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो उठाओ और यूज करो। दिस इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश, है ना? लाइक थैंक यू, सॉरी, आई एम सॉरी, ओह हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये चीजें तो मैंने कभी, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने भी कभी इसके लिए ट्यूशन लिया होगा कि टीच मी हाउ आर यू एंड ऑल। वो तो हमें पहले से आता है, हमने सुना, मतलब समझा एंड यूज किया। दैट इज स्पोकन इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई ग्रामर के लिए स्ट्रक्चर प्रैक्टिस जरूरी है। और किसके लिए? स्पोकन के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ग्रामर हो, वो सेंटेंस का मीनिंग समझकर भी यूज किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम कॉन्वेंट डज द सेम थिंग, दे डोंट गो फॉर ग्रामर लर्निंग फर्स्ट, वो सुनते हैं और यूज करते हैं। मेनी कॉन्वेंट स्टूडेंट्स स्पीक रॉन्ग इंग्लिश इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन धीरे धीरे समझ के वो बहुत अच्छे स्पीकर्स बन जाते हैं। द प्रोसेस इज द सेम। उनको ग्रामर थोड़ा पहले सिखाया जाता है, करेक्ट और नॉट? बच्चों को क्या सिखाया जाता है? मे आई कम इन टीचर, कि मे आई कम इन बना कैसे है, ये सिखाया जाता है क्या? No, ma'am. ये पता है कब सिखाया जाता है? When you are taught models. मेरे ख्याल से कॉन्वेंट में मॉडल्स जो है ना, वो 6th क्लास से शुरू होते हैं, as I teach like that, है ना? So yeah, कभी-कभी तो खुश रहो इस चीज में कि we know the structure and we are using. धीरे-धीरे टेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अगर यही सोचकर प्रैक्टिस बोलेंगे नहीं ना कि that I get stuck in tenses, तो फिर हाँ टेंसेस से थोड़ी दूरी बन जाएगी हमारी, and that should not be done. And इसमें लिखने का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, because once you write something, जितना हम रीड करते हैं,
we are giving input, but writing is the output of our learning. So keep writing. मेरा तो सबसे अच्छा मुझे लगता है, like, you know, I've got a diary. I have a lot of diaries like that, but this is my recent diary which I'm using. This is recent. मेरे को doodling करना पता नहीं क्यों पसंद है. Doodling मतलब I just do that. But this is of 2013. मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इस पे लिखना शुरू किया. अब तो मैंने बहुत गंदा कर दिया इसको. It's been 2 years लगभग, और मैं कुछ ना कुछ इसमें लिखती रहती हूँ. I keep writing. I keep writing. आज ये हुआ. I keep writing what I'm feeling today. I keep writing how I spend my day. I wrote a poem for my mother also. इंग्लिश में लिखा. आई डिड नॉट ट्राई हिंदी, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं. सो या आई कीप डूइंग दैट थिंग्स एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. आई लव दैम. आई लव यूजिंग सच थिंग्स. ये कहाँ से आया? इंटरेस्ट से. आप भी कर सकते हो. खाली बैठ के इंग्लिश को समय दो. थोड़ा समय देंगे तो इंग्लिश आपके साथ में होगी. गिव लिटिल टाइम टू इट. कीप राइटिंग. चेक योरसेल्फ कौन सा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है. किसी को तो डाउट क्लैरिफिकेशन बोलते हैं. डाउट क्लैरिफिकेशन कहीं अलग से नहीं आता है. इट कम्स फ्रॉम इनसाइड. अंदर से आता है कि भाई मुझे ये पूछना है, ये समझना है, लाइक दैट. सो या आई फील दैट ये करना चाहिए, है ना अनमोल? आपको भी करना चाहिए. ऐसे Yes, अलग से नहीं होगा, करना करूंगी. पड़ता है ना. लिखा करो, कभी कभी लिखा भी करो. लिखना सिर्फ बच्चों का काम नहीं है. लिखना हम भी लिख सकते हैं. We can also be a good writer. You can also start your blogs. जिन लोगों को बहुत अच्छा है, तो they can write us blogs also. लिखो. लिखना बहुत अच्छी बात है. Okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. तो ठीक है. If you start practicing it and if you get the result, it would be the happiest moment for me. Ma'am, you are not audible. Am I not audible really? Yes, now audible. Hello. Yeah. Yes. Hello. Okay. Okay, next doubts from your side. Good evening, ma'am. Hi Anuj, good evening. It's been a long time, huh? Yes, ma'am. So a mishappening is there, ma'am. That's why I'm not able to attend classes. Oh my God, what is that? Actually, my uncle expired in the last Thursday, ma'am. It should be Tuesday. I'm sorry. Yeah, Yes. tell me now. Actually, ma'am, I want this grammar notes, ma'am. Full notes in a sequence, ma'am. Could I get I this, will ma'am? provide. I will provide. Okay, ma'am. I will provide. I will provide in the announcement option so anyone can download that. Okay, Okay, ma'am. No, is this in a sequence, ma'am? I've got the sequence. It's in the sequence. Okay, ma'am. Actually, ma'am, I want every part of grammar. That's why I joined this institute, ma'am. I will provide you the things what I taught you and some of the related things related to that. Models, voices, other structures, they will be taught in intermediate level. So I will not be able to provide that, but I will provide all the things which are used for basics, to understand the basics and everything. So I will give. Okay, ma'am. And just give me just heading that it's a passive voice. I'll do in my other books. I have that, ma'am. But you just give me in sequence. That is your this after this happening. Actually, I want this, ma'am. Understood. But I would be giving you the whole tenses, what I taught you, to be verb, to have verb, adjectives, I think nouns, whatever we discussed in the classes, parts of speech especially, you know. And these things I can provide you. But passive Sorry, voice, ma'am. models, these things are the, of course, models and then passive voice. Models and passive voice. This is the actual sequence. Like that. Could I get from out of my class, ma'am? No, I don't think that you would be getting that.
Ma'am, any paid option, ma'am? That intermediate should be there for that. Actually, I'm not allowed to Yeah, share I'm the not paying certificate. for classes, ma'am. Like actually, I'm not paying for classes. I'm Till paying now- for only for Till extra. now we don't have any facility like that. Still we don't give, we are planning, we were planning actually, or we have been planning, I would say, to publish a book, to just have that book provided to Amazon also. But let's see, within 6 months we'll be doing that. Till now we haven't got this facility to provide extra notes. It's like that. Okay, ma'am. Let's see, we are Ma'am. hopefully just working on the book publishing also, so on Amazon it will be available. Let's see when it will Ma'am, it's too late for ma'am. 6 months is too late for me. ma'am. but we can't, like, there is no option other than this. There is no option. Still I'll ask the management. If it is there, I will give you. Okay, ma'am. I'll pay ma'am everything, but I want notes, ma'am. Understood, but till now we don't provide like that. For whatever we do in the classes, we provide you the same batches wise, I would say level wise. But I will ask you, Okay, ma'am. and I will ask the notes Okay. like other notes, and I have to ask that. Okay, ma'am. Let me inform ma'am if happens. I will inform you. If I am able Thank you, to ma'am. provide you, I will inform you. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. Good day, ma'am. Chaliye. So I am not refreshing, I am not rejoining anyone now. We'll be meeting tomorrow only with the conversation. And if somebody has any kind of structural related doubts or something, आप मुझसे कल भी पूछ सकते हो, और you are free to ask any time. I have shared my number with you, and even like I'm very much active in the group also, like in our Dr. English group, that 7 to 8. So you just ask me that. Okay. Okay. I'm not joining again. I'm not restarting the meeting because I think we have almost done everything. But tomorrow we'll be having the conversation. So come prepared. Okay. Okay. Okay, ma'am. Good night. Bye bye. Take care. Good day.